डिपार्टमेंट से इनके जो संजय कातोड़े सर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड है, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो यहाँ पे अपने काम के साथ बैठे हुए हैं। सो उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। देन हमें नाबार्ड ने सपोर्ट किया, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। इसके साथ हमारे साथ 15 और क्लब जुड़ गए। सो जैसे आप कोई कंसेप्ट लेके आते हो, अगर वो सबके लिए, जैसे हम फॉरवर्ड टेस्ट में बोलते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, सबके लिए कंसेप्ट होना चाहिए, तो वैसे वो कंसेप्ट हम लेके आए। एंड और रफ्तार से, जैसे हमारा पहला मोटिव ये था कि हेल्दी फूड का प्रमोट करना, बिकॉज मिलेट इज़ आवर ओल्ड एज कल्चर हम बोल सकते हैं। सेकंड हमारा मोटिव रहा कि फार्मर अपलिफ्टमेंट करना है। और अभी क्या हो रहा है, एंड थर्ड हमारा मोटिव था कि रूरल को अर्बन से जोड़ना है, ट्राइबल को फिर अगेन अर्बन से जोड़ना है। सो इसमें हमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स मिले। जब मैं नाबार्ड बैंक के पास गया था इनिशियली रोटरी मिली रतरौ के लेके, तो उन्होंने बोला ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। वो इवेंट्स आर लाइक जस्ट कि वो शो कॉज रहता है, जस्ट शो कर दो और फिनिश कर दो उसको। तो आप उसमें क्या करना, आप कैसे करोगे, आप उसको आगे कैसे लेके जाओगे। तो हमने बोला सर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर एक के लिए वो विन-विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। वी आर नॉट कॉम्पिटेटिव, वी हैव टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो आज का जो अपना मीटिंग है उसमें फार्मर्स भी है, उसमें मैन्युफैक्चरर्स भी है और उसमें बायर्स भी है, उसके साथ इनको सपोर्ट करने वाले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पर्सन भी है, और जो बैंकर्स है जो इनको लोन देने वाले हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो सारे लोग हैं। तो दिस इज द, हमने इसका एक मोटिव ही रखा था कि कनेक्टिंग डॉट्स ऑफ मिलेट मिशन करके। अभी मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे साथ जो रोटरी क्लब ऑफ सिकंदराबाद के दिनेश जजरिया करके है, वो आए हुए। मैं थोड़ा सा आपको, ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम सिकंदराबाद जस्ट टू सी द कैसा है एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे। एंड ही इज इन होटल इंडस्ट्री। सो वी आर नॉट लिमिटेड टू ओनली पुणे, सो वी हैव टू बी ग्रो लाइक एनीथिंग। पुणे से हमें बाहर जाने का है। सो वी हैव टू टेक दिस मिशन, काफ़ी आगे लेके जाने का है। ज़्यादा नहीं बात करूँगा बिकॉज वी आर हियर टू लिसन, बिकॉज काफ़ी एक्सपर्ट्स आए हुए, नासिक से आए हुए, सोलापुर से आए, उनको हम ज़्यादा सुनना है। ये बोलते ना, यू कैन बी द सन, कि आप सभी को लाइट नहीं दे सकते हो, बट यू कैन बी द लैंटर्न। जो छोटा सा दिया होता है ना, वो आप बन सकते हो। एटलीस्ट अपने आजू बाजू का जो डार्कनेस है उसको दूर कर सकते हो। सो दैट इज द मोटिव वी आर टेकिंग अहेड। आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू एंड यू आर वेलकम हियर। थँक यू। मिलेट इयर म्हणून जाहीर झालं होतं, पण मला असं वाटतं ते फक्त 2023 पुरतं न राहता पुढे व्हायला पाहिजे, कारण दॅट हॅज टू बिकम आवर लाईफस्टाईल म्हणून ते खरं तर वर्ष अनाऊन्स केलेलं होतं. आणि प्रदीपनी ते इतकं व्यवस्थित हेरलं आणि त्याचा जो कनेक्ट आहे गावाकडे, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं हे सगळं त्यांनी घडून आणलं. ज्यावेळेला त्यांनी मिलेट जत्रा घेतली होती त्यावेळी अतिशय सुंदर प्रोग्राम केला होता. थँक्स टू ऑल द प्रेसिडेंट्स. आज without many clubs coming together you cannot make any program bigger. So प्रदीपच्या हाकेला या सगळ्या लोकांनी छान साथ दिली आणि सगळ्यांनी एकत्र येऊन प्रोग्राम केला. आणि कुठेतरी मला असं वाटतं प्रदीप वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन पुटिंग दिस मिलेट थिंग इन टू माय हेड ऑल्सो. त्यामुळे यावेळेला कॉन्फरन्समध्ये आम्ही प्रत्येक मीलमध्ये एक कुठला तरी मिलेटचा मेन्यू आम्ही ठेवलेला होता. पूर्ण कॉन्फरन्स जी आपली 1200 लोकांची झाली आत्ता रोटरीची, त्याच्यामध्ये आपण पूर्ण प्रत्येक मीलमध्ये एक मिलेटचा आयटम आपण ठेवला होता. वी हॅड ऑल्सो इन्व्हायटेड स्पीकर्स ऑन मिलेट. जिथे आपण शक्य आहे तिथे सगळीकडे मिलेटचा प्रसार आपण आता आज आपला डिस्ट्रिक्ट करतोय. टुडेज प्रोग्राम इज अनदर सच प्रोग्राम. आणि मला असं वाटतं की हे अजून रेग्युलरली व्हायला पाहिजेत. प्रदीप, तुझं वर्ष संपलं तरी तू हे प्लीज प्रोग्राम्स चालू ठेव, कारण कोणीतरी एक माणूस लागतो की जो हे सगळं हलवत राहील मशिनरी. आणि रोटरीची मशिनरी मोठी आहे आणि ती जर खरंच हल्ली ह्या दृष्टीने तर खूप काही आपण घडवू शकतो, खूप काही बदल या समाजात घडवून आणू शकतो. आणि पण ॲज आय सेड की आय थिंक वी विल नीड टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस. वी जस्ट 4.5 months लेफ्ट ऑफ दिस इयर, बट आय एम शुअर यू विल कीप वर्किंग. रोटरीकडनं जे काही होऊ शकतं ते आपण सगळं करूयात. मॅडम, मी तुम्हाला म्हटलं तसं तुम्ही काही बेसिक काय होते, लोकांच्याकडे मिलेट्स घेतात पण करायचं कसं नक्की, तर रेसिपीज कमी पडतात किंवा मुलांना अट्रॅक्टिव्ह कशा होतील असं करून, असे म्हटले तसं की श्रीमंत लोक पैसे देऊन जास्त घ्यायला तयार आहेत,
पण त्याचं नक्की कसं करायचं ह्याच्याकरता मला असं वाटतं तो अवेअरनेस जास्त असला पाहिजे. ॲज ऑफ नाऊ दोन्ही धर्तींवरती काम झालं पाहिजे. अवेलेबिलिटी ऑफ मिलेट्स इन द मार्केट अँड द अवेअरनेस ऑफ हाऊ टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन. कारण आज जर का ही नवीन पिढी जर का मिलेट्सच्या बरोबर राहील, खरं तर मला माहितीच नाही की आपण मिलेट्सवरती एवढं का बोलतो, कारण त्याच्यावर आपण सगळे वाढलेलो आहेत. म्हणजे माझी जनरेशन तर ज्वारी भाकरी खाऊनच वाढलेली आहे आणि आपण तरी का त्या मिलेट्सवरती, पण कुठेतरी त्या सगळ्या वेस्टर्नायझेशनमध्ये आपण आपली सगळी जी मुळं आहेत ती विसरतोय. आणि हे फक्त मिलेट्सच्या बाबतीत नाही आहे. मला असं वाटतं यू टॉक अबाउट एनिथिंग विच इज रिअली गुड. आणि आपले वर्षानुवर्षाचा जो आपल्या भारताचं एज ओल्ड विजडम आहे, म्हणजे योगा आहे, मिलेट्स आहे, हे सगळं परत तिकडनं आलं वेस्टर्न कंट्रीजमधनं की मग आपल्याला पटतं की अरे हे खरंच महत्त्वाचं. इतकी गरज नाही आहे. आपले एवढे ऋषीमुनी आणि हे, म्हणजे मला माहित नाही, आय हॅव ऑलवेज बीन गिव्हिंग दिस एक्झाम्पल. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव सीन दिस मूवी कॉल्ड लुसी राईट, लुसी और समथिंग लाईक दॅट, ज्याच्यामध्ये इट्स शोन की युजली तुम्ही आणि मी आपल्या ब्रेनचा साधारण 3% वापर करतो. त्या मूवीमध्ये असं दाखवलं की हर ब्रेन गेट्स डेव्हलप टू ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल कपॅसिटी अँड देन व्हॉट शी कॅन डू विथ दॅट 10%. आणि मला असं वाटतं की आपले जे ऋषीमुनी होते की जे 200-200 वर्षापर्यंत जगायचे, किंवा त्यांना ती पूर्वी कुठलीही लॅब नसताना अंतराळात काय चाललंय, कुठले ग्रह काय, हे सगळी जी करण्याची ताकद जी आपल्या ऋषींमध्ये होती, तर मला असं वाटतं त्याचं कुठेतरी कारण असं होतं की त्यांचा ब्रेन हा 10-15% डेव्हलप्ड असणार आहे त्यावेळेला. आणि म्हणून विदाऊट एनी स्वँकी लॅबोरेटरीज आणि हे ते जे आज नोबेल प्राईज ज्याला मिळालं आहे त्यांनी असं प्रूव्ह केलं आहे की ही सगळी जी जग आहे ते सगळं बिकॉज वी ऑब्झर्व देर इज नथिंग लाईक दिस. आणि ही सगळी माया आहे. आता जग हे माया आहे आपल्या ऋषींनी केव्हा सांगून ठेवले. त्यांच्याकडे कुठली लॅब नव्हती, कुठले रिसर्च लॅबोरेटरीज नव्हते, काही नव्हतं. पण मला असं वाटतं जे ऋषींनी आपल्या ज्या एज ओल्ड विजडम 2-4 हजार वर्षापूर्वीपासून जे आपण करत आलो आहे त्याच्याकडे जर आपण सगळे परत गेलो तर प्रॉबेबली विल बी एबल टू युटिलाइज इफ नॉट 10% ऑफ आवर ब्रेन्स ॲटलीस्ट 4%, अँड दॅट 1% राईज इन द ब्रेन्स युटिलायझेशन कॅन ॲक्च्युली चेंज दिस वर्ल्ड. सो एज ओल्ड विजडम जे म्हणतो आपण आपल्या भारतामध्ये आहे त्याच्याकडे आपण परत जायला पाहिजे. आज आपल्याला संस्कृत म्हणा किंवा बॅक टू द नेचर ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरती आपण जायला पाहिजे. आणि मिलेटबद्दल मी खूप काय काय वाचते बघते आणि मला असं वाटतं की इट इज ॲक्च्युली वर्थ इट. पाणी वाचते, तुमच्या एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली आहेत, तुमच्या स्वतःच्या आरोग्याकरता चांगलं आहे. अजून काय पाहिजे कुठली गोष्ट आत्मसात करण्याकरता. सो मला असं वाटतं वी शुड ऑल गो टुवर्ड्स दॅट. आणि जे फॉरेन ग्रेन्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपण उगाच अडकून पडलेलो आहेत किंवा रिफाईंड फ्लॉज आहेत आणि ह्या सगळ्यात जे आपण अडकून पडले त्यातनं बाहेर यायला पाहिजे. आणि आज मॅडम म्हटल्या तसं की प्रतिकारशक्तीच नाही आहे मुलांमध्ये. मुलं मातीत खेळत नाहीत, मातीचा संबंध येत नाही त्यांचा. आणि मग म्हणजे मला आठवते आपल्याला सारखं आम्ही झाडं पडायचो इकडं तिकडं खेळताना आणि माती भरायचो जखमेत. दॅट यूज टू बी माय म्हणजे मी तर सारखी धडपडायची आणि मला बँडेज माझ्या सगळीकडे असायचे. शाळेत मला माझे दागिने म्हणायचे. म्हणजे एखाद दिवशी बँडेज नसेल तर लोक मला म्हणायचे आज तुझा दागिना नाही का. पण त्या बँडेजच्या आत माती असायची. पडलं की तिथलीच माती घेऊन त्या जखमेमध्ये ते दाबायचो आम्ही. इतकी ती प्रतिकारशक्ती आपली एवढी मस्त होती. आणि त्यामुळे प्रॉबेबली आज वी आर फ्री ऑफ ऑल द डिसीजेस, द एनर्जी लेवल्स आर हाय, ऑल गोज बॅक टू दॅट. आणि हे सगळं आत्ताची मुलं मिस करतायत. हे सगळं जर आपण नीट केलं की मिलेट्स, मातीमध्ये खेळणं, आपलं सगळं योगा आहेत, आपले व्यायामाचे प्रकार आहेत, तर मला असं वाटतं की प्रतिकारशक्ती एक चांगलं जीवन आपली मुलं आणि आपली नक्की जगू शकतील. सो वी शुड ऑल गो बॅक टू दॅट ways of lifestyle, way of living. And thank you Pradeep, thank you all of you for supporting this cause. आणि याचबरोबर बाकीच्या पण गोष्टी तुम्ही त्याच्याबरोबर घ्याव्यात असं मला वाटतं. मिलेट बरोबर मातीत खेळायला लोकांना घेऊन जा गावाकडे. आय एम टेलिंग यू दॅट इज रिक्वायर्ड. माझ्याकडे घेऊन या. आज माझ्या नातीला माझ्या डॉक्टरांनी सांगितलं की हिला मातीत खेळवा. अरे मी म्हटलं अरे वा फारच छान. म्हणजे नाहीतर बाकीचे आई वडील म्हणतात नको नको माती लागेल. आय डोंट अंडरस्टँड दिस कॉन्सेप्ट नाव. अनहायजेनिक. हो पण ते अनहायजेनिक आम्ही जखमेत धरून आम्ही एकदम हायजेनिक होतो आज.
what I'm trying to say की we should have go back to our earlier ways of living. या सगळ्या मॉडर्न आणि वेस्टर्नाइज लिव्हिंग स्टँडर्ड्समध्ये काही अर्थ नाही. सो थँक्यू प्रदीप, as I said again, let us all into this again and again, आणि प्लीज कंटिन्यू दिस गुड वर्क. आणि तुम्हाला सगळ्यांना, तुम्ही जे कोणी छान छान काम करताय सर, आपल्याला खूपच आमचे धन्यवाद आहेत तुम्हाला सगळ्यांना की तुम्ही हे सगळं एवढं छान काम करता. थँक्यू सो मच. So I am the founder of Millet Tribe, जहाँ पर हम लोग मिलेट्स का कुकिंग सेशंस लेते हैं, मिलेट अवेयरनेस कि क्यों खाना है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ ईटिंग इट, सही तरीका क्या है उसको खाने का, और उससे हम टेस्टी रेसिपीज़ कैसे बना सकते हैं. अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई भी डिश है और आपका कोई भी इशू है, अगर वो खाना टेस्टी नहीं है तो आप उसको ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोर हो जाएगा. अगर आपको रोज़ कोई बोलेगा कि आप सिर्फ मिलेट का खिचड़ी बना के खा लीजिए क्योंकि आपको डायबिटीज़ है, तो कितने दिन तक आप उसको खा सकते हैं. तो हमें जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, सो दैट हम उसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकें. हमारे जो बच्चे हैं आजकल, उनको हर चीज़ चाहिए, फ्रॉम वॉफल्स टू पिज़्ज़ास, दे नीड एवरीथिंग. तो हमारा क्या काम है एट मिलेट ट्राइब कि हम सारी चीज़ें आपको खिलाएंगे, फ्रॉम साउथ इंडियन इडलीज, डोसास टू गुजराती हांडवोस टू ढोकलास, या आप बोल लीजिए समोसास या पकौड़ास, वॉफल्स, पिज़्ज़ास, सब कुछ, पुडिंग्स. वी विल मेक एवरीथिंग बट इंक्लूडिंग मिलेट्स. तो मतलब जब हम मिलेट्स उसमें डाल रहे हैं तो मदर्स ऑल्सो दे डोंट फील गिल्टी. और एक उनका ये तरीका है कि आप रोज़ के बच्चों की डाइट में वी आर मेकिंग वंडरफुल केक्स. जो हम केक्स बना रहे हैं विद जवार, बाजरा, रागी के साथ हम जो केक्स बना रहे हैं, वी आर मेकिंग कुकीज़, वी आर मेकिंग एवरीथिंग, यू नेम एनीथिंग, और हम बोलेंगे येस वी आर मेकिंग दैट. तो हम हर चीज़ बना रहे हैं जो कि मिलेट्स के साथ हम कर रहे हैं. सो कैन वी सो आई हैव डन सेशंस विद इस्कॉन के जो कातरज का जो हमारा मंदिर है, वहाँ के हेड शेफ हैं जो, सो ही हैड इनवाइटेड मी कि वहाँ पर आके मुझे आप मिलेट कुकिंग सिखाइए, बिकॉज वो चाहते थे कि सन्यासीज जो वहाँ रहते हैं तो उनकी डाइट में मिलेट्स आने चाहिए. तो वहाँ पर मैंने उन लोगों को जाके सिखाया. तो उन्होंने, इस्कॉन वालों ने, अभी वो लोग भी मिलेट्स को प्रमोट करते हैं, दे प्रमोटेड अ लॉट. और उन्होंने सन्यासीज की डाइट में या जो भी वहाँ प्रसादम बनता है उसमें वो लोग मिलेट की डिशेस बना रहे हैं. देन अभी जो मेरा लास्ट जो सेशन मैंने किया था, दैट वाज एट KEM हॉस्पिटल. KEM हॉस्पिटल से इनवाइट था कि डायबिटिक विंग में बच्चों के लिए मैं रेसिपीज सिखाऊं, बिकॉज बच्चे हैं ऑलरेडी, दे आर सफरिंग विद डायबिटीज़. तो अगर आप उनको, मतलब एक खाना जो होता है दैट इज़ द मेन, एक हमारे लिए एक वो होता है कि पूरा दिन में आप एक अच्छा खाना आपको मिलना चाहिए, तभी आप उसको खा पाएंगे. तो बच्चों के लिए मैंने मिलेट्स का रेसिपीज़ वहाँ पर सिखाया था, एंड दे वर वेरी हैप्पी. बच्चे वहाँ आए थे और वो इतना खुश हो के, दे हैड द रैप्स, दे हैड द, सो दिस इज़ द इस्कॉन वी डिड. ही इज़ द हेड शेफ ऑफ पुणे इस्कॉन के हैं, जहाँ पर हम लोगों ने उनको समोसास वगैरह सब कुछ वहाँ पर हमने बनाना सिखाया था. जस्ट कीप स्क्रॉलिंग. एंड दिस इज़ द KEM हॉस्पिटल वी डिड, जहाँ पर बच्चे थे और उन्होंने सारा खाने का टेस्टिंग किया था. तो टेस्ट करके एंड दे वर वेरी हैप्पी कि मतलब बहुत टेस्टी है आंटी, ये बहुत टेस्टी है आंटी, वो बहुत टेस्टी है. मतलब कि हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, बीमार बच्चे हैं तो उनके साथ मतलब उनको भी अच्छा खाने को मिलना चाहिए. Then this is the one I did at Rotary Club. This is कल्याणी नगर का जो है, वहाँ पर हम लोगों ने किया था. Then this is Army Wives Welfare, आवा के साथ हम लोगों ने वहाँ, I had taught almost 125 ladies. अभी हम लोग का फोकस क्या है कि हम घर की जो औरतें हैं उनको मिलेट के साथ खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि घर से, आपकी जो घर की किचन से है, आप जैसे मैम ने बोला कि घर की किचन से आपका जो हेल्थ है वो शुरू होता है. तो बच्चे हैं घर में, बड़े बूढ़े हैं, सबको मिलेट्स घर में, अगर आपकी प्लेट में, हर प्लेट में मिलेट आएगा, तभी हम वहाँ से ही स्टार्ट कर पाएंगे किसी भी चीज़ को. तो अगर हमें अपनी कंट्री को आगे हेल्दी बनाना है तो वो जो शुरुआत है हमें घर की किचन से ही करनी पड़ेगी.
तो हमें उस खाने को सब टेस्टी कैसे बनाना है, तो मिलेट ट्राइब पे वो वही हम करते हैं. सो वी टेक सो दिस सेशन आई डिड एट सरदार पटेल विद्यालय, वन ऑफ द रिनॉन्ड स्कूल्स इन दिल्ली. तो दिल्ली के स्कूल में हमने किया था. तो हमारे जो वर्कशॉप्स रहते हैं दे आर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. अगर हमें कोई इन्वाइट करता है एक ग्रुप के लिए तो आई गो देयर एंड टीच, और अदरवाइज आई टेक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्कशॉप्स फ्रॉम माई होम ओनली. सो अभी बहुत सारी इस तरह से, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, मैं अपने बारे में अगर बोलूँ तो मैं पिछले 12 साल से मिलेट्स खा रही हूँ बिकॉज आई एम एलर्जिक टू व्हीट. तो जब हम दिल्ली, आई एम अ दिल्लीइट बेसिकली, और 12 साल पहले जब हम पूना शिफ्ट हुए थे तो मुझे यहाँ आके पता चला कि जवारी और रागी भी कुछ होता है. वहाँ दिल्ली में तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ है. और 16 साल पहले मेरा सीलियाक डायग्नोज हुआ था. तो आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट, क्योंकि दिल्ली बीइंग आपका पूरा मैदा और गेहूँ है दिल्ली, एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट. और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी मिलते नहीं थे उस टाइम पे. बट जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ जवार रागी के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. एंड मैंने कभी भी दिल्ली से आने के बाद कभी भी मार्केट से उठाकर कोई भी ग्लूटेन फ्री फ्लावर नहीं खाया है. बिकॉज मुझे लगता है जब ग्लूटेन फ्री मिलेट्स एज अ मिलेट फ्लावर, अगर ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट अवेलेबल है विच इज़ नेचुरल, तो मैं बाजार का बना हुआ ग्लूटेन फ्री आटा क्यों खाऊं. तो इसीलिए मैंने कभी भी मार्केट से कुछ भी इस तरह से लेके नहीं खाया. तो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद जो भी मुझे बनाना है. हलवा बनाना है, बीइंग अ पंजाबी आई एम अ फूडी, तो मुझे खाना बहुत पसंद है और टेस्टी खाना पसंद है. तो आप हमारी जो रेसिपीज़ भी देखेंगे आपको कहीं भी ये नहीं रहेगा कि आप कहीं भी कम हो रहा है आपके टेस्ट में. तो आई स्टार्टेड मेकिंग ऑल द डिशेस. मतलब कैन यू सी द डिशेस वी आर मेकिंग विद मिलेट्स. So these are 100% millet recipes, from burgers to laddus to idlis to cakes to waffles to cookies, puddings, मतलब गुलाब जामुन्स. So we are making everything with millets. Even पूरन पोलीज we are making, सब कुछ हम लोग उसके साथ कर रहे हैं. तो मैंने अपने आप को नेचुरल डाइट पे ही रखा. मतलब मैं बाजार से लेके नहीं मैंने कुछ खाया. तो धीरे धीरे इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते करते आई स्टार्टेड मेकिंग एवरीथिंग. फ्रॉम कुकीज़ मैं अपने लिए बनाती थी, केक्स बनाती थी, हलवा खाने का मन है आज. इवन माई मेड यूज टू से कि हम तो आज तक जवारी की भाकरी बना रहे हैं और आप तो पता नहीं क्या क्या बना लेते हो उससे. तो दिस इज लाइक कि वो कोशिश मैंने अपनी तरफ से की. आई एम अ सेल्फ लर्नड पर्सन. तो इन वन ऑफ द ऐसे ही हम लोगों ने एक एग्जीबिशन में वन ऑफ द स्टूडेंट्स वो आए, उन्होंने मेरा मिलेट का केक खाया एंड दे सेड मैम दिस इज सो गुड कि हम बोल नहीं सकते कि रागी का केक है. तो देन ही सेड कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन. ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपने क्या किया है. सो आई सेड आई हैव डन PhD इन मिलेट्स. तो मैंने बोला अभी मेरा 12 साल का हो गया, अभी PhD हो गया है मेरा अभी. सो इट इज़ ऑल, मतलब कि आपका वो सब मैंने करके खुद से धीरे धीरे और सारा सीखा है उसको. सो दिस, थैंक यू सो मच. मेरे खेती पे लोगों को बुला के उनको जवार का बाजरी, तभी माइनर मिलेट्स के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था. आई एम टॉकिंग ऑलमोस्ट 15 ईयर्स बैक. तो हमने सबको खाने में जवार का भाकरी, बाजरे का भाकरी वो सब खिलाया. और पोस्ट लंच जनरली अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या सेमिनार में जाते हैं तो पोस्ट लंच लोगों को नींद आती है. एम आई राइट और रॉन्ग? सो आफ्टर दिस मिलेट का लंच करने के बाद एवरीबडी वॉज फ्रेश एंड एवरीबडी वॉज नॉट लेथार्जिक एट ऑल. एंड टुडे आई थिंक यू मस्ट हैव फेल्ट द सेम थिंग. Am I right or wrong? Because generally for such meetings we always eat white idlis or we eat poha, upma. So we eat so much of carbohydrates. But today what carbohydrates we had, they're totally different. So that is why at that time after eating jawar bajra also they were very fresh after the lunch. And today I feel after eating millets you always feel very fresh and non-lethargic at all. Why I started, many dietitians don't know about millets. There are very few dietitians that talk about millets, and when people come to us for the diet charts, we know what exactly they are facing nowadays. I have done my nutrigenomics course also. So according to them, they say 70% people they have gluten sensitivity or gluten intolerance. So how I started working on millets. One couple came to me for the diet counseling and the lady was a diabetic person, and I told her not to have wheat at all, no rice, no wheat. I told her to have only jawar bajra bhakris.
After 2 years, means I was keeping follow-up with her, and after 2 years she came and her diabetes was totally fine, and her husband said, "Madam, because my wife is making bhakri, I am also eating bhakri, आणि मला गेले 10 वर्ष पोटाचा त्रास होता तो गेला." So I was also amazed कि after, so basically many people do have gluten issues. So once you stop eating chapatis and then you shift to jawar, bajra or minor millets, you see beautiful results. So we'll just go to the next slide. Yes. छोटीशी अनाउन्समेंट आहे MH12TY 3902 सर गाडी. So basically we should remember that, as we just heard today, that our body has got millions of cells and every cell needs nutrition. So whatever we put in our mouth, it becomes part of us. So quality food eating is very important. काही पण आपण आपल्या पोटात घालतो त्याची क्वालिटी खूप इम्पॉर्टंट आहे. The food we choose makes a lot of difference. Next slide. So I would just, next slide please. So just a small health score for you all. So I want you to participate. It will take only 1 minute. Just count how many yes or no. I am free from any medicines. If it is yes, it is yes. Any pathy. Once I get up in the morning, I feel fresh, energetic. I do not need coffee, tea. Okay? Then I don't need extra sleep on weekends. आपण म्हणतो ना संडे मस्त झोपायचं आहे. So not like that. Once I close my eyes in the night, I open my eyes straight in the morning. Next slide please. Okay, fifth question is, I have got very good bowel movement which is cleared in the morning without any support. No triphala, no erandel. Okay, then I have clear skin. Pigmentation, no pimples. No pigmentation, no pimples. I feel energetic throughout the day. Okay, I can do 1 hour workout without getting tired. Then next question is, I experience no pain in my body. Knee pain, heel pain, kamar ka pain, gardan ka pain, nothing. Then I feel positive feelings of joy, love, smile, happiness regularly. So let's see. Let's go to the next slide please. So how many are below 5? It's okay if you don't want to confess also, it is okay. How many between 5 to 7? Okay, above 7? Very good. And 10 out of 10? Very few actually. So next slide. So this was just a small understanding. So why we have to talk about diet so much? Because our age-old system has said, Ayurveda, if the diet is wrong, medicine is of no use. And if you take correct, diet is correct, medicine is of no need. Also, famous Thomas Edison has said the doctor of the future will not talk about medicine, but he will talk about prevention. So food is and diet is so important that it will prevent from different diseases, and also it will have a beautiful curing effects. I work with diabetologist, I work with gynecologist. So एका डायबेटोलॉजिस्ट कडे जेव्हा आम्ही काम करत डाएट देत होते, so one person came. He was a पुजारी म्हणतात ना, हे भटजी जेकडे ठिकठिकाणी जाऊन पौरोहित्य जे करतात. So I gave him the diet chart. So he said की मॅडम मला एवढं फिरावं लागतं, so it is very difficult for me to stick to the diet that you have given to me, because he was a heavy diabetic person and he was on insulin and his sugar levels were very, very bad. So just at that moment the doctor came, the diabetologist came, and he said ki, oh, are you finding this diet difficult? He said yes. Don't worry, you eat whatever you want, I will give you more medicines. So that is what is happening. Actually diet is a medicine, food is a medicine, and millets are something which are very important for us, and we should look them as a medicine. And not only that, they are going to heal our body. Today we are living in a very toxic situation. There are so many pollution, so much of pollution around us. According to one data, we are taking 5,000 chemicals inside our body every day. So our liver is getting overwhelmed because of these toxics. So if you want to heal your body, if you want to free from diseases, you have to see some remedy from your food itself. Next slide please. Yeah, so why again, just a small this thing. We in India, though we are talking so much about millets, but majority of us are suffering from main lifestyle disorders like diabetes, hypertension or heart attacks. The major leading cause in our country is heart attack.
27% people are dying because of heart attack. And also lifestyle diseases is one thing, communicable disease. Our immunities are very poor. आता जस्ट आपण म्हटलं की मातीत खेळायला पाहिजे, पण ते होत नाही. आपल्या पालक आपल्या मुलांना एवढं प्रोटेक्ट करतात की आपली इम्युनिटी एवढी पुअर झालेली आहे. आपल्याला स्वाईन फ्लू किंवा ट्युबरक्युलोसिस किंवा या सगळ्या गोष्टी आहेत. अस्थमा, चाइल्डहुड अस्थमा इज व्हेरी कॉमन. इवन adult asthma, dust allergies, different allergies are very common. So basically allergy is also related to our immunity. Gluten allergy, wheat allergy, milk allergy, so many allergies people are having nowadays. So here the diet plays a very important role. Next, last is nutritional problems. Everybody nowadays has got vitamin B12, D3, hemoglobin deficiency. So many people have got protein deficiency, hair loss, tiredness, ह्या सगळ्या गोष्टी. तर ह्या 3 गोष्टी आपल्याला ॲड्रेस करायच्या आहेत. लाईफस्टाईल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेबल डिझिजेस अँड न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीज. सो देन व्हॉट इज द रेमेडी टू हॅव द राईट काइंड ऑफ अ डाएट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट. या, so generally people come to my clinic. When they come to my clinic, I take their recall. तुम्ही दिवसभर काय खाता? 24-hour diet recall. So generally people eat only mono diets. Morning they eat poha upma, afternoon they eat only chapati bhaji, evening they eat chapati bhaji rice dal. There is no variety. Variety is very important because our body needs 40 to 45 nutrients on daily basis. So variety will come from if you add variety of food in your diet in the form of millets, in the form of ragi, in the form of jawar, bajra, foxtail, etc. etc. Okay? And of course we just spoke about people are eating lots of processed food. शहरामध्ये खूप जास्त मॅगी, पास्ता, ब्रेड, सकाळी उठल्या उठल्या लोक ब्रेड खातात बिकॉज इट्स अ कन्व्हिनियन्स मॅटर. सो नेक्स्ट स्लाइड. नो रॉ फूड. पीपल आर इटिंग व्हेरी लेस सॅलेड्स अँड व्हेजिटेबल्स. सो हे आपलं डेली डाएट आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो बेसिकली मिलेट्स. सो द मेन चॅलेंजेस की तुम्हाला मिलेट्स खायचे असतील तर पेशंटला द्यायचे असतील. आता माझ्याकडे पेशंट आला तर त्याला मी सांगते की तुम्हाला मिलेट्स पण खायला पाहिजे, पॉझिटिव्ह मिलेट्स खायला पाहिजे. सो ते असे बघतात की हे काय सांगतायत. मग मी सांगते फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट. सो ते अजून असे बघतात की अरे व्हॉट शी इज टॉकिंग सम फॉरेन लँग्वेज. सो आय टेल देम दिस इज नॉट समथिंग विच इज फॉरेन फूड बिकॉज पीपल थिंक की मी काहीतरी किनोवा वगैरे सांगते. बट आय टेल देम दिस इज अवर ट्रॅडिशनल फूड. And I am so overwhelmed that many of us do not know. Today this group is aware about the millets, but so many patients who come to us, they don't even know what are the millets are. They only know jawar, bajra, nachni. When I tell them sama, savar, aada, bhagar, kodu, only they know one thing. What is that? Bhagar. Yes, oh bhagar, bhagar. Ami bhagar khato. But what bhagar they are eating? They are eating polished bhagar. They are eating adulterated bhagar. So choosing right kind of millet. So I feel मगासपासून ज्या मी स्लाइड्स बघते तिथे एक मोठा रोल मिस झालाय तो म्हणजे डायटिशियन्सचा. बिकॉज आमच्याकडे जे लोक येतात त्यांना न्यूट्रिशन एज्युकेशन देण्याचं काम आम्ही करतो. आणि नॉट ओनली बिकॉज डाएट इज नॉट ओनली सायन्स बट इट इज ऑल्सो अन आर्ट. हाऊ यू आर गिविंग, हाऊ द कन्झम्पशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज इफ आय टेल 10-year-old child to eat bhakris, he will not eat it. So that is why, as he said, appam banwa, appe banwa, dosa banwa, even noodles, bread. There are so many people who are coming up with different recipes. Next slide please. So as this I'm not going to talk because now everybody knows about this, that we are celebrating this International Year of Millet. Yeah, next please. So these are the millets, just ज्यांना माहिती नसेल त्यांच्यासाठी. Next please. These are the Marathi names. If you want, you can click a quick snap on the millet's name because many of the people are not even aware कि milletची नावं काय असतात. We are also learners. I am not saying when I did my dietetics 30 years back, there was no word about millets in our textbook. Today we are talking about millets. Even we are getting learning about the names of the millets. So these are the common names in Marathi. Next slide. Okay, as we just heard, it is very rich in fiber. So it is very necessary because we know about fiber. Next please. Okay, this as she said, they are negative according to Dr. Khadavali. Negative millets are rice and wheat, ज्याच्यामध्ये फायबर खूप कमी आहे.
न्यूट्रल मिलेट ज्वारी बाजरी नाचणी ज्याच्यामध्ये फायबर मॉडरेट आहे आणि पॉझिटिव्ह मिलेट्समध्ये फायबर खूप जास्त आहे आणि फायबर खूप जास्त असणं आत्ताच्या जीवनशैलीला खूप गरजेचं आहे कारण आपला गट मायक्रोफ्लोरा खूप जास्त वाईट पद्धतीने अफेक्ट झालेला आहे 80% of our immunity is in our gut microflora. Why people are getting B12, D3 deficiency because of our gut microflora? Because त्याचं absorption होत नाही आहे. We are a dignified platform for various disabilities. We have more than 10 different disabilities working here, like hearing and speech impaired, Down syndrome, autistic, visually impaired, learning disability, cerebral palsy, etc. We are not a trust and not an NGO. We are in the business of encouraging exclusive cuisines and transforming the lives of people with disability. So, as a server, I'm hearing and speech impaired. You have to place an order in Indian Sign Language. You have menu? Yes, they can all see a menu. I'm holding it, Anita. Okay. Okay. Thank you. Thank you. थँक यू सो मच. थँक यू एव्हरीवन फॉर कमिंग हिअर. इथे भारतीय सांकेतिक भाषेतच तुम्हाला ऑर्डर प्लेस करावा लागेल. वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी, वी आर शोईंग इन्क्लुजन अँड स्ट्रेंथ अँड वी आर मेकिंग एन अटेम्प्ट की तुम्ही इथे पॉईंट करून किंवा कन्फ्यूज होण्याची काहीच आवश्यकता नाही आहे. तुम्हाला गायडन्स खूप व्यवस्थित पद्धतीत माझे मुलं देतात आणि इट इज लाईक एनी अदर नॉर्मल रेस्टॉरंट. वी डोंट वॉन्ट टू बी स्पेशल, वी डोंट वॉन्ट टू बी एक्सक्लुझिव्ह, वी वॉन्ट टू बी नॉर्मल आणि त्याची संधी तुम्ही सर्वांनी आम्हाला दिली याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. Sign language. Okay. Now Rotary, I want all your hands up. All your hands up. This is a sign of happiness and clap. Okay. Now I'm going to start with R. R. Indian Sign Language. O. Very easy. O very easy. T. A. Again R. Koण टाकू शकतो? Who remembers? And Y. Rotary rocks. Thank you so much. Thank you. आम्ही ऑलरेडी त्याचं प्लॅनिंग चालू केलेलं आहे आणि पुढच्या वर्षी आम्ही 3 दिवसाचा प्रोग्राम ठेवणार आहे. ज्याच्यामध्ये जो एक्झिबिशन आम्ही ठेवला होता त्याच्यापेक्षा जास्ती मोठा एक्झिबिशन आम्ही ठेवायचा प्लॅन करतोय आणि तिथं एक चांगल्या ठिकाणी अशा ठिकाणी बघतो की तिथं जास्तीत जास्त पब्लिकचा मुवमेंट होईल. त्या हिशोबाने शेवटच्या दिवशी प्रोग्राम करू, पण आधीचे 2 दिवस जे आहेत ते स्पेशली फॉर ऑल सोसायटी आणि बाहेरच्या लोकांसाठी ते ओपन करू आणि 3 दिवसाचं आम्ही मिलेटचं एक्झिबिशन ठेवणार आहोत आमच्या क्लबतर्फे. सो मला आजचे जे स्पीकर आमचे आहेत संजय पाटील साहेब, त्यांचं इंट्रोडक्शन देण्याची संधी प्रेसिडेंटनी दिलेली आहे, तर त्यांच्याबद्दल मी जरा 2 शब्द सांगू इच्छितो. मिस्टर संजय पाटील इज असोसिएट विथ BIF डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन Pune as a Chief Program Executive, Agro Biodiversity since last 18 years and focus efforts undertaken for conversion and management of indigenous crops, wild edible plants, tree spices at various districts of Maharashtra, Gujarat, Odisha for nutritional security livelihood in climate change concerns. Secondly, he also associated with the Indian Council of Agriculture Research, ISAR, NBGPR, National Gen Bank, Government of India as a member of Research Advisory Committee. So I invite Sanjay Patil Sahab in this. Thank you. In tribal rural parts of a country, and then linking wisdom with technology and science, and then developing opportunities for the issues which we are facing. And today's topic is millets for climate change, nutrition and livelihood. Next. So I'm working with BIF since last 18 years and basically in tribal parts of India. My major work is in Jawhar Palghar district, which is Warli and Kokna tribal community. I had completed chemical technology from ICT, and that time I realized I know a lot of things and I will do something good and great and it will replicate all over. But after going back to ट्राइबल लोकेशन आई रियलाइज मुझे बहुत कम पता है, ठीक है. और एक ट्राइबल रूरल हमारे जो इनोवेटिव लोग हैं उनके एक नॉलेज पे हमारे बहुत सारे PhDs हो सकते हैं. तो टुडेज टॉपिक रिलेटेड टू फूड कितना नैरो हो गया. फ्रॉम 4 लाख प्लांट स्पेसीज स्टिल नाउ
we had documented only 3 lakh plant species, and from that 30,000 are edible worldwide. 7,000 utilized for different purposes, and still now we had prepared a database of genomics and everything for only 200 crops. That means हमें बहुत कुछ पता ही नहीं है अभी. And in that 30 feeds world, दुनिया 20 अनाज ही खा रही है. उसमें 3 मेजर कौन से हो सकते हैं? Wheat एक हो गया, second rice, and third maize. Our 65% ऑफ फूड प्लेट ये तीनों फूड से भरी हुई है वर्ल्ड वाइड. तो कितना नैरो हो गए हम. ये विजडम को हम भूल गए और टेक्नोलॉजी को आगे लेके गए, एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ. ये रीजन है वर्ल्ड वाइड. नेक्स्ट, वाइट एग्रो बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन इन दैट एग्रो बायोडाइवर्सिटी, विद इन एग्रो बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो प्लांट, क्रॉप, एवरीथिंग. Around 75% diversity in our food plate and in the cultivation already lost हो चुकी है. Only 25% बची हुई है. Within crop, between crops. आज भी 47% माल न्यूट्रिशन है. हमने बहुत सारी तरक्की की है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, फिर भी इश्यूज है. क्योंकि हम प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो फूड है, प्लांट्स है, इसका रिलेशन है कहीं नहीं कल्चर, फूड सिस्टम, डाइवर्सिटी इसके साथ, जो हमने उसको मोनोक्रॉपिंग, मोनोवैराइटल क्रॉपिंग की तरफ लेके गए. सो फेस्टिवल्स, रिचुअल एंड पेंटिंग्स, इसमें पूरा हमारा ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है. कौन सा भी फेस्टिवल हम देखेंगे इसका रिलेशन फूड सिस्टम के साथ है, एग्रीकल्चर क्रॉप का कल्टीवेशन के साथ जुड़ा हुआ है. उसको भूल जाएंगे तो हम मिलेट करते जाएंगे, एंड देन ये तो एक जस्ट एक कमोडिटी बनेगा, एंड देन ये रिवाइव पूरा एज ए सिस्टम नहीं रिवाइव होगा. एक जो पेंटिंग दिख रहा है, ये वार्ली पेंटिंग है. एक ही पेंटिंग में एटलीस्ट एक PhD तो आराम से हो सकती है. ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट पेंटिंग इज लाइव जेनेटिक रिसोर्स और लिविंग थिंग, जो हमारे दूसरे इसमें नहीं होता है. नेक्स्ट, हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, यानी इसका रिलेशन ट्राइबल नॉलेज एंड फूड सिस्टम के साथ डायरेक्ट है. उनको तो पता है, हमने अभी उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया. जिसको पुअर मैन्स फूड बोला जाता था, नाउ इट इज़ अ फूड फॉर फ्यूचर इन क्लाइमेट चेंज एंड लाइवलीहुड के लिए. तो ये की इश्यूज वर्ल्ड वाइड, फूड सिक्योरिटी खतरे में आ गए. ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी एक नीड थी, लेकिन अभी एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, और जो होगा मिलेट एंड रिलेटेड क्रॉप्स. न्यूट्रिशन की बात हो रही है अभी. इतना फूड है टन्स में, लेकिन मिलियन टन्स में, बट स्टिल देयर इज माल न्यूट्रिशन. लाइवलीहुड कहाँ से आएगा? फूड फॉर फ्यूचर, इसमें फंक्शनल फूड, न्यूट्री रिच फूड, मेडिसिनल फूड, ये बातें अभी दुनिया वर्ल्ड वाइड सभी जगह हो रही है. सो इसके ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली कैल्शियम रिच फूड, आयरन रिच फूड, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, दैट इज माय एरिया ऑफ वर्क. देन क्लाइमेट चेंज, हमारे हाथ में बहुत कम सॉल्यूशन है. सॉल्यूशंस लाइज इन ट्राइबल रूरल पार्ट्स विद द कम्युनिटीज, जिसको हमने कभी देखा नहीं. सोवेरेनिटी फॉर रिसोर्सेज, सीड जो हमारे हाथ में था कभी हमारे हाथ में नहीं. इफ देयर इज नो सीड, नो फूड, नो फूड सिक्योरिटी. तो हमारा पहला टारगेट वहाँ होना जरूरी है. इन्वायरमेंट के बारे में तो बात हो रही है. रिलेटेड टू मिलेट्स, एक 2016 में एक आर्टिकल आया था पूना के जो वैद्य है, खड़ी वाले वैद्य, ज्वार का प्रॉब्लम नहीं, बाजरा का नहीं. व्हाट अबाउट द माइनर मिलेट्स? लिटिल मिलेट, एक भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है. ऑल मिलेट्स आर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की इंडस्ट्रीज, उनके कंजम्पशन में नहीं है. दे आर ग्रोइंग नाउ. हियर हमारे साथ गुरु जी है वहाँ के, जिन्होंने बहुत काम भी किया है इसके ऊपर. तो छोटे यूनिट्स नहीं है, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट नहीं है. गांव में एक यूनिट भी जाएगा तो पूरा गांव में मिलेट कंजम्पशन में आएगा. 9 टन्स में वो लिटिल मिलेट वही ग्रो कर रहे हैं, बट 1 kg भी उनके डाइट में नहीं है आज. क्योंकि मिलेट प्रोसेसिंग, लिटिल मिलेट प्रोसेसिंग के अर्लियर जातं म्हणतो ना, ते जाते होते, एंड इट इज प्रिपेयर फ्रॉम मड, मिट्टी से बनता था, लकड़ी का भी नहीं था और स्टोन का भी नहीं था. वो जात बनाने वाले लोग ही नहीं है अभी. 2 लोग सिर्फ आइडेंटिफाई हुए कुडाल में जो आज बना सकते हैं इसको. वो हैंड पाउंडिंग होता था, मिलेट प्रोसेसिंग वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उनके पास वो भी सॉल्यूशन. तो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, ये प्रोग्राम
रोटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम न्यूट्री सिक्योरिटी के बाद उनको कोई न्यूट्री पैकेट दे के न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं आएगी। इंस्टॉलिंग 1 यूनिट इन विलेज एंड वी हैड नाउ डेवलप्ड विद वन ऑफ द वेंडर इन पुणे कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी पे ही गांव में इवन सोलर बेस अगेन, तो वो सक्सेस हुआ है। विद इन 1 मशीन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये ट्राइबल रीजन्स के फोटोग्राफ, दिस इज फ्रॉम नंदुरबार रीजन, ये 2010 के फोटोग्राफ है। आई हैड स्टार्टेड दिस वर्क इन 2008 फ्रॉम नंदुरबार। नेक्स्ट, दिस इज द डाइवर्सिटी। ज्वार में नंबर ऑफ वैरायटीज, क्रॉप में, उसका कलर में, टेस्ट में, क्वालिटी एस्पेक्ट में, एंड यूज में, मेडिसिनल वैल्यूज में, क्रॉप का पीरियड में, इतनी सारी डाइवर्सिटी हर एक क्रॉप में थी। जैसे येलो सोरगम की बात कर रहे हैं, इट इज फ्रॉम, अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब है हमारे साथ, उस्मानाबाद का जो ज्वार है येलो सोरगम, हल्दी जैसे ही, हल्दी से ऐसा निकाला ऐसे लगता है। इट इज गुड फॉर डायबिट बिकॉज वेरी स्लो रिलीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्लो रिलीज वाला चाहिए, कहाँ से लाए, बट इट लाइज एग्जिस्ट इन दिस डाइवर्सिटी। बाजरा में भी बहुत सारे टाइप्स है, नाचनी, रागी, देन वरई। नेक्स्ट, yes, next, this is the jowar diversity, so 250 millimeter to 4500 millimeter, शेप अलग है, कलर अलग है, उसका एग्रोक्लाइमेटिक जोन अलग है, but we are promoting only 5 or 10 varieties and these are not suitable for all locations. तो इसलिए मैंने सैंपल्स भी लाए हैं ना सब, बहुत सारे। So I had identified 100+ sorghum types in different parts. We had done nutri profiling also, even genomic level work we had done, and which are resilient in climate, which sorghum for which recipe. Sorghum rich in antioxidant, sorghum as an instant energy supplier, specific varieties उसमें थे। Next, so this is also sorghum diversity. Next, if you see height, 16 feet height sorghum, हमारे आज के sorghum, we had a sorghum around 7 feet or 8 feet maximum. What about the food security? ठीक है, we are talking about ours only, fodder security। हाँ से ये मेजर कंसर्न है वर्ल्ड वाइड अभी नेशन में, इंडिया में। 16 feet हाइट वाला sorghum वो दिख रहा है, ये तो यहाँ तक है अभी, ये पता नहीं कितना हाइट है इसका। This is from Narmada, यानी Nandurbar district area, and this is from Palghar district. No any pest, no any disease, then again no any special care, and instant energy supply. These are their traditional recipes. Laha, then ladu, and then kondi also. There is one recipe, moa flowers plus this laya powder. So reviving traditional food recipes. So just I had discussed little bit. Each one has something unique. Modern recipes ठीक है, but there is a wisdom behind. जैसे पिटला भाकरी बोलते हैं हम, चपाती भाकरी कभी बोला है कि हमने? नहीं है। ये कॉम्बिनेशन इम्पोर्टेंट है, एंड उसमें साइंस भी है और विजडम भी बहुत है, तो हमें उसके तरफ भी देखना जरूरी है। नॉट ओनली अबाउट द मिलेट प्रोसेसिंग इन स्मॉल विलेज, उनके डाइट में कहीं नहीं। आज वी आर टॉकिंग हियर इन पुणे कि हमारे कंजम्पशन में है, उसको बढ़ाए। व्हाट अबाउट विलेजेस? इनके घर में कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर उनके क्विंटल्स में अनाज है, बिकॉज दे हैड अ इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ फूड, जो हम सोचते नहीं, हमें लगता है पैसा दे दिया हो गया सब कुछ, नहीं है। बार्नयार्ड मिलेट विच इज रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, सो व्हाट इज द अप्रोच, कैसे आगे लेके जाना है? कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, फूड सिस्टम एंड नॉलेज होना जरूरी है। कल्टीवेशन, इसमें साइंटिफिक पार्ट थोड़ा, इसमें यील्ड कैसे इंप्रूव करें। कंजम्पशन जो इम्पोर्टेंट है विद इन द कम्युनिटीज एंड ऑल्सो फॉर अदर्स। कमर्शलाइजेशन, जिसके ऊपर आज भी बात होगी। देन कैपेसिटी बिल्डिंग एट डिफरेंट लेवल। कलेक्टिव एक्शन, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब ने बोला कि ये एक इंस्टीट्यूट का, एक साइंटिस्ट का, एक रोटरी का ऐसा नहीं काम, इट्स अ कलेक्टिव प्रोग्राम शुड बी देयर, देन एंड देन ओनली वी कैन डू दिस वर्क। एंड ये 2 या 3 साल का मिलेट ईयर से होगा नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स। सीड प्रोडक्शन,
cultivation, establishing seed banks, then product development, awareness related programs. Next, there are people, जैसे रही भाई की बात की, 2016 में मैं मेरे टीम के साथ कलसुबाई हिल्स वहाँ ऐसा ट्रैवल कर रहा था. जस्ट आया यहाँ पे कौन ऐसा है जिनको ज्ञान बहुत है. वो बोले, हमारे टीम में 2 थे, वो बोले ये एक है बहुत बड़बड़ कर दी है. हाँ, चलो उनके घर पे वो हटने गए. वी हैड डिस्कस लॉट, पूरा दिन वी हैड डॉक्यूमेंटेड द थिंग्स. 3 साल उसके ऊपर काम किया. एंड आफ्टर दैट स्मॉल वीडियो डॉक्यूमेंट्री, मैं वन ऑफ द वीडियो डॉक्यूमेंट्री मेकर, 3 मिनट का, वो वर्ल्ड वाइड वायरल हो गया BBC में. एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ तक आ गया. वहाँ पे एक अच्छा सेंटर भी स्टैब्लिश, एंड वहाँ पे अराउंड 1550 वुमेन का नेटवर्क है. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुई है. एंड देन नाउ दे हैड बिजनेस, अभी 56 लाख का बिजनेस हुआ है. वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं पॉसिबल है. न्यूट्री गार्डन किट्स बनाते हैं, मिलेट का सीड बनाते हैं. वहाँ पे अभी पेटेंट्स के लिए एप्लीकेशन भी फाइल किए उनकी कम्युनिटी के नाम. उनको नेशनल अवार्ड मिला है पूरा ग्रुप को भी. So this is from Odisha. I am working in Odisha now. Then Uttarakhand. There are people. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर होनी चाहिए. जो मुझे बुरा लग रहा है कि यह नहीं हो रहा है. And Rotary should take lead in that. कैसे genome savior, knowledgeable लोग वो सामने आए and we felicit them. उनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए आपसे, शहरों से कुछ नहीं चाहिए. थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया तो डेफिनेटली दे विल डू लॉट मोर. एंड सपोर्ट सिस्टम, रोटरी विलेज का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? रोटरी मिलेट विलेज, ये पॉसिबल है. भोर है, वेल्ले है, राजगुरु नगर है, नियर बाय पुणे की बात मैं कर रहा हूँ. वो हो सकता है कि जहाँ हर एक रोटरियन जाए, अरे ये हमारा मिलेट का प्रोग्राम है, वी आर कल्टिवेटिंग, वी आर सपोर्टिंग देम. तो ऐसा विलेज, वहाँ पे एक सीड बैंक बनेगा, सीड प्रोड्यूसर फार्मर बनेंगे, एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा. इट इज फॉर फार्मर्स, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, सबके लिए होगा. ये हो सकता है. एंड बहुत बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है. डिसेंट्रलाइज सेंटर, हर घर में कुछ न कुछ होगा. फोकसिंग मिलेट, कोई मिलेट के रेसिपी में एक्सपर्ट होगा गाँव में, कोई सीड प्रोडक्शन में होगा, कोई ग्रेन प्रोडक्शन, कोई पैकेजिंग में. ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट होना. 1 और 2 मॉडल्स भी सफिशिएंट है जिससे मैसेज क्लियर जाएगा. ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम तो इवेंट और यहाँ कम्युनिटी लेवल, सिटी लेवल पे तो इम्पोर्टेंट है, बट अलॉन्ग विद दैट गांव के लेवल पे वो होना है. क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ सिंस लास्ट 18 ईयर्स ट्राइबल रीजन, उनके फूड प्लेट से ये गायब हो रहा है. जिसके लिए हम बहुत सारा अभी यहाँ पे कर रहे हैं, बट वहाँ की सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है. तो क्योंकि जब शहर के मिलेट फेस्टिवल हम गाँव में कर रहे हैं, शहर के लोग वहाँ जाए, उनको लगता है अरे गाँव के शहर के लोग इतना गाड़ी वगैरह लेके ये मिलेट का काली रोटी खाने के लिए आए. डेफिनेटली बिहेवियरल चेंज वो भी हमें देखना पड़ेगा. एंड देन उनका सिस्टम कैसे, वो कैसे रहते हैं, क्या इशू, ये उनके इश्यूज है, वो भी हमें पता चलेगा. नेक्स्ट, सीड प्रोडक्शन, ऐसे सेंटर्स. सीइंग इज बिलीविंग. हमारा पावर पॉइंट पे लोग कोई ये नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं. व्हेन दे विल सी different crops of finger millet, different types of little millet in the field, definitely they will select and then produce the seed. उनको अभी फिर से नॉलेज एंड रिसोर्सेस रिवाइव करने की जरूरत है. नेक्स्ट, रिसर्च स्टेशन पे तो बहुत होता है. सो आई हैड स्टार्टेड दिस वर्क इन मोखाड़ा एंड जवार एंड नाउ स्प्रेड इन डिफरेंट ट्राइबल रीजन. दिस इज नॉट इन एनी रिसर्च स्टेशन, बट द इंटरनेशनल लेवल का ट्रायल चल रहा है. एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड वाइड नाउ कि कैसे कम्युनिटी को साथ में लेके रिसर्च करें. हमें लगता है उनको कुछ पता ही नहीं है, बट दे नो बेटर. जैसे एक सेंटर रोड साइड पे किया था एट हार्वेस्ट, उसमें से 5 फिंगर मिलेट के वैरायटी गायब हो गई. नेक्स्ट ईयर आई हैड सीन कि बाजू के खेतों में दिखने लगा. लोगों को पूछा कि इतना सारा लगाया था, ये 5 ही क्यों लेके गए? जो हम साइंटिफिक इवैल्यूएशन करते हैं वो उनके तरीके थे. यील्ड देखा, पेस्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंस देखा, हेल्दीनेस ऑफ प्लांट देखा, सॉइल टाइप के लिए सुटेबल देखा, जो वही तो हम करते हैं. ठीक है, इवैल्यूएशन, एग्रोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, सब सारी चीजें जो देखते हैं. नेक्स्ट, दिस इज इन द फील्ड. साइंटिस्ट एंड फार्मर्स एंड डिपार्टमेंट्स शुड कम टुगेदर टू डेवलप द प्रोग्राम, तो ही ये बनेगा. नेक्स्ट,
सीड प्रोडक्शन, मुझे लगता है कि कंपनी या कोई सीड प्रोड्यूस लोग नहीं कर सकते, तो लोग बहुत अच्छी तरीके से ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट, कल्टीवेशन, यील्ड इम्प्रूव कैसे करना है इन स्लोपी लैंड ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे टेक्निक रिवाइव किए हैं थ्रू डिस्कशन विद द साइंटिफिकली प्रूव किया है अक्रॉस द स्लोप कल्टीवेशन, तो यील्ड बढ़ता है। कौन सी वैरायटी, उसके लिए लोकल मेथड्स क्या है, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया तो भी यील्ड इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट, सीड प्रोडक्शन, एंड इट इज नॉट जस्ट 5 गुंटा और 10 गुंटा, एकर्स में क्वालिटी सीड प्रोड्यूस हो रहा है, तो सीड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट, फार्मर्स एंड साइंटिस्ट शुड कम टुगेदर, जो अभी हम कर रहे हैं, रिसर्च इंटरनेशनल साइंटिस्ट आ रहे हैं फील्ड में, बिकॉज पहले ऑल ओवर वर्ल्ड फोकस इज ऑन XC2, मटेरियल ले लो, नेशनल जीन बैंक डिपॉजिट कर दो, इसका मतलब कंजर्वेशन हो गया। But now in XC2 to in situ, in the field with the people, and in the at the location where from where that, क्योंकि इंडिया में more than 4.5 लाख origin नेशनल जीन बैंक में है, तो we are trying now to get back that इवेंट्स है, रिचुअल्स के साथ ये जोड़ा गया है हर एक मिलेट का टाइप। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी फूड सिस्टम्स, ऑन फार्म लेवल का वर्क होना बहुत जरूरी है, जो फील्ड सेंटर्स इस्टेब्लिश ऐसे कर सकते हैं। जोग्राफिकल इंडिकेशन, GI की बात करते हैं ना हम, कोई प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे GI अपने हर एक ब्लॉक में, ट्राइबल इंटीरियर पार्ट्स में करके उसको कैसे हम एक प्लेटफॉर्म दे, जैसे बोलते हैं कि अम्बे मोहर इज फ्रॉम मावर, उसका हिस्ट्री अम्बे मोहर का है, पेशवा ने, ये मेरा लास्ट स्लाइड होगा। तो व्हाट नेक्स्ट, एक तो एक मास कैंपेन ले सकते हैं क्या, आइडेंटिफाइंग, she chose the unconventional path of research and innovation, right? They say be an innovator, not an imitator. And then she served at Tata Memorial Hospital, Godrej and Boyce. Later, she became the CEO of the Indo-Arab Chamber of Commerce, promote nutrition, healthcare, child welfare, disease-free food. And then she found her own company, Indian Millet Company, with 100 farmers on board. Right? And she promoted, as I said, disease-free food. Today what we had was really a healthy food. Perhaps I can only say that we have extended our life. Already our president has said that she is the founder of TerraSyn. Terra I know very well because I was in Delhi. Terra means the earth, हमारी पृथ्वी जो होती है। TerraSyn food pot is the first globally recognized restaurant. Okay, run by the, can you guess? First person with disability. But I don't agree. You know, these are people whose abilities she has bought out. So let's not call the disability. The abilities she has bought out, converted it into business. बीत जाती है जिंदगी ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि यही नहीं पता कि जो मिला है उनके साथ में करना क्या है। So it gives me a great pleasure to introduce to you Dr. Sonam Kapse. Please, sir. Kapse, thank you, sir, for that lovely introduction. We've just begun. We're at the very prime of a journey which should have started 76 years back when we got independence. But unfortunately, we all have our own burdens. You know, we have our own survival and we have our own responsibilities and duties. So our priorities change. Sanjay sir has already spoken so much about millets. And we all know since 1 year, the Modi government has been talking about the International Day of Millets, the benefits of millets, the health aspect of it, the goodness. But do you think that everything is good in this world? ऐसी कोई चीज़ जो 100% good है? Sir, I think yeah. I mean, I really wished my husband was here today. Yeah, but when we talk about the goodness, there are multiple aspects which need to be covered. हम कोई भी एक ग्रेन को 100% गुड नहीं बोल सकते,
So even it be Shri Dhanya, Dev Dhanya, or some supreme name for millet which has been recently given. But 2014-15, अगर आप Google research में या Google search में millets या न्यूट्री सीरियल डालते तो उसका definition था चारा. It was known as chara, and then a small line which said that this is animal fodder. So something that India was having through ages and through our ancestors and through years of generations who are surviving on these coarse grain, we never had any kind of database which suggested it as a food system, not for animals but for human. And then all of a sudden millets are in vogue. Are they really that good? Are they really that important? Can we just survive on millet? यहाँ पे कितने लोग हैं जो रोज millet खा रहे हैं? Every day? So this is the majority of hands I've seen in any conference. I usually see 1 or 2 people putting up their hand who eat millet on a regular basis. And most of them are either a heart attack survivor or a serious diabetic case. So when it comes to people like majority of the population, the 98% that I'm talking of, millet is a no-go. It's an absolute no-go. And that is because there are a lot of research which is still pending, as Sir said. You can't talk about the goodness without a scientific research backing it up. Science, I mean, there is divine power, I know, Bhagwan hai, but there is something more important than that, that is nature and science, and they go hand in hand. So how millet research needs to take place and move forward is very, very critical. और मैं आपको बहुत दिलचस्प बातें बताने वाली हूँ. Nothing very heavy duty, nothing very boring, nothing which talks about the nutritive good qualities of millet. But I'm going to talk about millet with gut health in a very simple format. अभी कह रहे हैं कि millet बहुत अच्छा है gut health के लिए. True, we all have read that, we all have realized that, some of us are having that. But gut health has a memory cells. So they have different enzymes which digest your food. You eat anything, they digest. Their duty is to digest, to absorb nutrition, to give it back to the body and make you work as a whole and soul unit. So when we talk about gut health, we have a gut memory. हम लोग जो भी हमारे ancestors, my grandfathers, great grandfathers, जो भी वो generation to generation खाते आए हैं, that forms a gut memory. There is a cell memory. Your entire body is made out of cells. Cells से बनता है tissues, tissues से बनता है organs. So every cell has a cell memory, and that's science. So gut memory is very, very vital when it comes to disease. I have served Tata for 7 years in the cancer genetic department. I'm a cancer genetic specialist. I have served as the CEO healthcare for Indo-African, Indo-Arab chambers. So Africa is again a millet hub, and not just millet. The grains in Africa like teff and fonio are highly nutritious, and it's a developing country like ours. India, Africa में बहुत अंतर नहीं है. Unfortunately, they don't have a Modi there, so probably that's also one of the reasons. But seed banks and a passport data of seeds is something that they have been maintaining through ages. I was with the Columbia Climate School last month, and Shaumik Banerjee sir's very good close aide, उनके साथ में थी, जो again he's into seed conservation, seed preservation and seed information. So we were talking about all the tribal areas, different parts. I have served Karnataka government, UP government, central government, that is Madhya Pradesh, and now they have called me back to Maharashtra. So Maharashtra is always last when it comes to any kind of innovation and research. I'm sorry, we don't believe in research. We are all very talented in Maharashtra. We just want to go for it. So that's not the case when it comes to science and health, because there's a lot of research that is involved, and there is still very negligent amount of research on millets. So gut में now kale chips, kale leaves, kale salad, ये बहुत ज़्यादा trend चल रहा है. I'm just giving you an example. So the minute you have kale, next day your stomach is cleared. You feel, oh God, kale is working wonders for me. मेरा पूरा पेट साफ हो गया, मुझे बहुत हल्का और light लग रहा है. And then everybody is buying kale salads and kale chips. The truth is, gut memory. There is no gut memory of kale. मैं जवार और बाजरा खा रही हूँ. I'm a Maharashtrian. I'm from Nasik, and I have been eating jawar bajra forever. My ancestors are eating jawar bajra, but I have started eating kale salads in Pune. That's the trend. And then I realized that it is cleaning my system so well. It's detoxifying me. It's making me more healthier. Crap. The truth is, we don't have a gut memory of kale.
The minute I put kale in my body, my gut is going to think it's a foreign particle. Bheg to isko bahar. So it's your body who is not identifying an ingredient and throwing it out, and the nutrition absorption for a foreign material is minimal. So you're not going to get anything from kale except for a poop. So we have to come back to our basic, and we have to come back to the grains that have been incorporated through our landscape and through our generations. We will always, as I said, go back to millets when we have a disease or when we are trying to lose weight. So the health food sector is a huge sector. Can you just pull it up? Sorry, I didn't get time to make a presentation. I'm just come back from Bombay, but next time I'll come prepared for Rotary. So we are talking about the millet market in India, which is estimated at USD 9 billion in 2019, and is expected to become 12.5 billion, approximately 99,400 crores by 2025. Now this is estimated. But आप लोग मुझे बताइए, आप millet, if you ever have a oat bowl and go for your sugar checkup, you will realize that it spikes your blood sugar 18 times faster than rice and wheat. So it is more harmful than rice and wheat. And हमारे यहाँ पे athletes को oat पे oats बनाना के साथ खिलाया जा रहा है, जबकि वो आपके glycemic index के लिए ठीक नहीं है. Yeah, I can say it without. No, Mike. Now the second thing that she said right now, that taste. Taste is very crucial. The behavioral aspects, the behavioral trends have changed. We all are focused towards the westernized way of eating. And what we are doing with International Year of Millet, where I was a part of Maharashtra State Task Force as an advisory for a lot of agriculture officers and farmers, I realized that everybody is hell-bent on making products out of millets without working on the taste. Right. We just want to make millet, International Year of Millet, and one good news, the US government and India signed a treaty for International Decade of Millet now. So from this, So from this year, it's going to be a decade. We get a lot of time for experimentations and research. So please research कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Millets, multi-millets, I'm coming back to the topic, is not a good thing to do. Multi-grain is not a good thing to do. Imagine a Rotarian, a doctor, a CA, an engineer, all taken together to do one task. Give you nutrition. मैं अपने पेस में करूँगी, ये अपने पेस में करेंगे. CA will do it at his pace and the engineer will work in a different level altogether. Do you think it's going to benefit your body? You're putting your body in a fix. You're giving it more work than it is supposed to do. मेरे गट को अगर सिर्फ गेहूँ पचाना है, सारे एंजाइम्स रेडी है और उसके साथ सोयाबीन और बार्ली भी आ गया. So my gut is confused and then the gas is produced and then you say मुझे indigestion हो रहा है, मुझे gluten intolerance हो गया है. Because you are mixing multiple grains together without knowing the scientific evaluation and the data that is backed up by these grains. So do not mix grains. You want to enjoy kodu, do it for a day. You want to enjoy poso, do it for a day. You want to enjoy finger millet, do it for a day. Do not mix. From this multi-millet things, I'm going to come to the grading of millets. Now Khadarwali sir talks very extensively about it. Neutral millets, super millets and pseudo. I mean, he doesn't talk about pseudo millets, but I'm going to tell you about pseudo millets. Neutral millets क्या है? Anybody? जवार, बाजरी और नाचनी ये न्यूट्रल मिलेट्स बोला जाता है. क्यों? अब मोदी जी ने तो उनको श्री धान्य और देव धान्य बोला है, भगवान का धान्य. Why is it called a neutral millet? Because, I'm sorry, I'm going to break this myth for all of you. It is equivalent to rice and wheat. So it has only, when I say only, 3 to 5% of nutritive content, fiber, micronutrients more than rice and wheat. So they are, if your go-to diet grains, nahi hoga kuch. They are nutritive value is only viable up to 5% for jawar, bajra and nachni. Yes, if you sprout them, you increase the nutritive content. I'm going to come back to that as well. But super millets, that is the micro, coarse grain, chara,
millets, nutri-cereal, Shri Dhanya, Dev Dhanya that we are talking about. Also, barnyard, little, foxtail, the most highly nutritious brown top, kodo, then foxtail. So all these minute millets, जिनको नासिक में बगर मिल्स है, one of the most profit-making, money-making industry is right there in my hometown, Nasik, which has used CFTRI technology. I'm very closely associated with CFTRI. I'm working with top leading scientists of our country for child malnutrition and anemia through millets. So that's one of the research work that I'm doing. But CFTRI के सबसे advanced machinery is there to dehusk or decorticate or clear millets into a very white, nice, polished bhagar, samay ki chawal, जो fasting के लिए इस्तेमाल होते हैं, and India is one of the biggest market for that. So they are the most profit making and money making. But what they do is they take any millet. They don't segregate kodo, porso, barnyard, little, कुछ नहीं. सब एक साथ लिया जाता है. There is a 7-layer processing and dehusking and polishing which is done, and then सफेद grain. You can't spot which was a foxtail and which was a barnyard and which was a little. You just can't spot it, and it cooks in 5 minutes. So when we do this decortication or dehusking, there are, for especially smaller grains, I'm talking only about micrograins or the super grains that I spoke right now, they have different layers, and these layers have different values. So when you dehusk or decorticate, there are high toxin values on the cover. इसीलिए उसे fertilizers नहीं लगता है. It is in a shell. It is protecting itself. It does not require fertilizers, pesticides, insecticides, harsh sun, too much rain, doesn't matter. Millet will still grow because nature has made the grain in such a way that there are multiple layers which are very, very tough. And we all are suffering, whether it is an agriculture-based institution, whether it's our government, Krushi Vibhag, or whether it is a processing unit person. Dehusking, decortication, ये first stages manual ही होते हैं. Manpower involved ही होता है. It cannot go directly inside a machine. There is no machine made by IIT Mumbai, IIT Kharagpur, or IIM Bangalore. Nobody has been able to make one advanced device which works on one basic and most important aspect, dehusking or decortication of millets. And that's the reason farmer बोलते हैं मैं cotton करूँगा और sugarcane करूँगा. I'm making money overnight. मैं ये साफ करते बैठूँगा तो my money is going to come after a month. मैं अपने लिए ही करूँगा. I don't want to sell it. I don't want to. And the most critical aspect is the market chain. When we talk about the commercial market and when we talk about forming a trend of eating healthy or gluten-free, we do not have a network market collaborative chains in place. So that is still going to take a long time. Before going for our next speaker, so we'll recognize some people who are literally working in that millet, in conserving millet. So I would like to invite agriculture. तो आंबा देवगडला पिकतो, त्याच्यावर 8 ते 10 फवारणी असतात. तुम्ही त्या लॅबमध्ये संशोधन करा, त्याचं निरीक्षण करा किती पॉइझन आहे. माझ्याकडे 89-90चं प्लॅन्टेशन आहे. मी 94 पासून आंबे विकतोय. मी कुठल्याही कीटकनाशकाची फवारणी करत नाही. इव्हन आता मग दशपर्णी आहे, बीज अमृत आहे, हे सुद्धा नाही. निसर्गाच्या साथीनं जेवढं उत्पन्न आहे तेवढंच मी घेतो. आजही आपलं चॅलेंज आहे, फेसबुकला, व्हॉट्सअपला, इंस्टाग्रामला येतंय सेंद्रिय आंबा मिळेल. इथले व्यापारी आहेत रोकडे पुण्याचे, त्यांनी मी चॅलेंज केलं गेल्या वर्षी. म्हटलं तुम्ही लॅबमध्ये तपासणी करून देता काय? शांत बसला तो. ही वस्तुस्थिती आहे. आपण खेड्याकडे गेला जा, तुम्ही तुम्हाला सर्व मिळेल. मगाशी मॅडम तुम्ही बोलल्या की मुलांना ते नाचणी मिलेट नाही खाऊ शकत, नुसती नाचणीची भाकरी नाही खाऊ शकत. आज आमच्याकडं बारी गावामध्ये जो बाळू घोडे भयंकर मिलेटवर बोलतो, आज त्याची मंडळी आपे बनवते, नाचणीचे आपे, वरईची इडली. तुम्ही खाता ना इडली, तुम्हाला दिलं तर तुम्ही खाला. वरईची खीर, जेवढे विजिटर लोक येतात त्यांना वरईची खीर, त्यांना विचार कुठली खीर आहे त्यांना नाही सांगता येत. म्हणजे आज खेड्याकडे सर्व आहे. म्हणून महात्मा गांधी सांगितलं तर खेड्याकडे चला, खेड्याकडे चला. त्याचं कारण ते आहे. तर ते अनुकरण मणिबाई देसाईंनी केलं. त्यांनी आपला समाज उभा केला. त्यांचंच आम्ही सहकारी. मणिबाई देसाई पुण्याला जेव्हा आले त्यांचा मी जोडीदार आहे. मणिबाई देसाईंना 4-5 वेळेस मी आमच्या घरी जेवण पण केलं. आजही मी जमिनीवर झोपतो.
माझ्या घराला मातीची जमीन आहे, म्हणजे असे तुमची फरशी वगैरे नाही लावली. मी सांगितलं मी आईपर्यंत नाही लावायची, मी गेल्यानंतर बघूया. तर हे आपण अचानक आणलं पाहिजे. आज माझं 73 वर्ष वय, तुम्ही म्हटलं माझी आजी 100 वर्षाची. आजही आमच्याकडे 100च्या पुढे जगणारी माणसं आहेत. माझं 73 वर्ष वय जाणवतं का तुम्हाला? 73 रनिंग आहे माझं. वेळेवर झोपणे, वेळेवर जेवणे. आता मोबाईल वापरतो मी, तर मोबाईलला सुद्धा नियंत्रण ठेवा तुम्ही, वेळ ठरवून द्या. मग आमच्याकडं नाचणी वरई, तुमच्या माहितीसाठी 70 पर्यंत साहेब आम्ही नाचणीच खाली, दुसरी भाकरीच नव्हती. आमचा प्रवरा एरिया आहे, प्रवरा नदीच्या परिसरामध्ये आम्ही राहतो. तिथं नाचणीची भाकरी खाली जायची आणि मुळा नदीचा जो परिसर आहे तिथं वरई आणि सावा हे दोनच धान्य 70 पर्यंत होते. 70 नंतर तुमचा दुष्काळ आला, त्याच्यानंतर तुमचं बिल आलं हे आणि ते उत्पन्न घटत गेलं. म्हणजे नाचणी वरी हे जे मिलेट चाललंय हे धान्य खाणारा माणूस गरीब माणूस असा मानला जायचा. आणि आज मात्र पैशावाले माणसं ते पैसे घेऊन खायला तयार मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून आमचे वडील म्हणायचे जुनं ते सोने, जुनं ते सोने, ऍक्च्युअल खरं आहे ते. म्हणून आपण त्याच्याकडे गेलं पाहिजे. तळापर्यंत जा, नुसतं शेंड्याकडे नका बघू, तळापर्यंत जा, ते निरीक्षण करा. आजही काळाची गरज आहे आणि आजही खेड्याकडे गेलं पाहिजे. निदान तुम्ही 2-3 महिन्यातून फेरफटका मारायला तर बरेच लोक जातात. त्याचं कारणच ते आहे. आज इथलं जे वातावरण आहे, आता दिल्लीचं वातावरण प्रदूषण किती काय झालं. आता आठवड्यात जायचे साहेबांबरोबर, मला पाटील साहेबांबरोबर, तिथं 4 दिवसाचं फंक्शन आहे. तर आपण हे केलं पाहिजे, निसर्गाला जपलं पाहिजे, निसर्ग संवर्धन केलं पाहिजे. बायबमार्फत आमच्याकडे भरपूर काम चाललेलं आहे. जशी शेतकरी काम करतात तसं आता विद्यार्थ्यांना सुद्धा जे दुर्मिळ झालेल्या ज्या वनस्पती आहेत त्याचं बियाणं संवर्धन. आता मी शेडनेट बांधलंय, तिथं औषधी वनस्पती, दुर्मिळ झालेले फळझाडं, कंदमुळं याचं नर्सरी पण होतोय. हे असं प्रत्येक कार्यक्षेत्रामध्ये असे छोटे मोठे माणसं आहेत, ते काम करतात, पण त्यांना असं प्रसिद्धीच्या धोतात नाही. आता मणिबाई देसाईंनी जेव्हा आणले आमच्याकडे, ते म्हणे आपला प्रसिद्धी नकोय, प्रत्यक्ष कृती करा. शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभा राहायला पाहिजे. नोकरदारांना जी पेन्शन मिळते ती शेतकऱ्यांना पेन्शन नाही. मग झाडं लावले, फळझाडं लावले, त्याच्यातून त्यांना आर्थिक सहाय्य मिळेल आणि ती त्यांची पेन्शन असेल, असे मणिबाईचे विचार होते. मी 89 पासून बायपमध्ये जॉईंट आहे. आजही समाजसेवेचं विनामूल्य काम माझं चालू आहे. आज माणसं मार्गदर्शन करतात पैसे घेऊन, ताई मी पैसे नाही, मी सांगतो मी विनामूल्य मार्गदर्शन करणार, मला पैसे नको आहे. तर असं ही वाटचाल चाललेली आहे. आज रोटरी क्लब गेल्या वर्षी मला आदर्श शेतकरी म्हणून पुरस्कार दिले अकोल्याच्या वतीनं. आजही इथं मला तुम्ही सन्मान चिन्ह दिलं, इथं बोलायची संधी दिली, याबद्दल आपले आभार मानतो. थांबतो. जय हिंद. Millet program and organized by Rotary Camp. So I got to know a variety of what you can say rooted or maybe our age-old wisdom about the agriculture. But I am a sustainable architect, so I feel that agriculture and the sustainable architecture, even our age-old wisdom about our attire, so everything is connected. So we should actually revive our age-old wisdom about our whole lifestyle, not only about the agriculture, not about the architecture, but everything together. So this is very good and very fantastic event. Thank you so much, Rotary. नमस्कार, मी रवींद्र प्रभुणे, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ पुणे साऊथ. आज मिलेटविषयीचा हा जो खेडकरांनी केलेला कार्यक्रम आहे त्याला मी आलो होतो आणि 10 सप्टेंबर महिन्यामध्ये जी मिलेट जत्रा घेतलेली होती त्यामध्ये आमचा क्लब एक स्पॉन्सरर क्लब म्हणून जॉईन झालेला होता. मिलेटविषयीची ही मूवमेंट त्यांनी केलेला सर्वांगीण त्याच्याविषयीचा विचार आणि त्याच्याविषयीचं प्रॅक्टिकली केलेल्या या गोष्टी या आजच्या घडीला अतिशय उत्तम आहेत आणि प्रत्येक क्लबनंच नव्हे तर प्रत्येक जणांनी या गोष्टी आचरणात आणाव्यात असं मलाही वाटतं. धन्यवाद. 23 हे वर्ष
आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष म्हणून साजरं झालं. त्या अनुषंगाने शासनाने मिलेटला किंवा आपल्याला त्याला आपण पौष्टिक तृणधान्य म्हणतो. म्हणजे थोडंसं मी याबाबत अधिक असं बोलेल की पौष्टिक तृणधान्य किंवा याला एक शब्द होता भरडधान्य किंवा कोर्स सिरियल्स. आणि साधारणपणे एक असाही समज होता की कष्टाची भाकर, झुणका भाकर, कोर्स सिरियल्स हे कुठेतरी त्याला एक रिफाईननेस नव्हता. तर त्याला एक काय म्हणतात आपण ग्लॅमराईज म्हणा किंवा एक न्यूट्री सिरियल्स अतिशय एक प्रॉपर त्याला नाव दिलं ज्याला आपण पौष्टिक तृणधान्य म्हणतो. आणि त्याचा प्रसार करण्यासाठी गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा केंद्र शासनासोबतच एक मिलेट मिशन म्हणून एक मिशनसुद्धा हाती घेतलेलं आहे. ज्याचाच एक पार्ट म्हणून आपण मला वाटतं त्याचा उल्लेख केला की 2-3 महिन्यापूर्वी आपण अल्पमोचक म्हणून एक कार्यक्रम घेतलेला होता. असे वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू आहेत विभागाचे सुद्धा प्रमोट करण्यासाठी. माझी आपल्याला या प्रसंगी विनंती आहे की या ठिकाणी जे काही प्रोसेसिंग किंवा हॉटेल किंवा कॅटरिंग सेक्टरमधले जे काही सदस्य उपस्थित असतील आणि मिलेटचे अनेक पदार्थ आहेत. आज आपण पाहिलं की ते राळ्याचा, वरीचा उपमा असतो, अनेक पदार्थ असतात. बऱ्याचदा ते लोकांना माहीत नसतात किंवा त्याची चव माहीत नसते. तर हे थोडेसे आपण सोशल इन्फ्लुएन्शियल ज्याला आपण म्हणू अशा वर्गाने आपण थोडेसे प्रमोट केले तर याचा निश्चितपणे प्रसार होईल. शासन आपल्या परीने प्रयत्न करतच आहे. याचा जास्तीत जास्त जेवढा प्रसार झाला तर याची डिमांड मार्केटमध्ये वाढेल. ऑब्व्हियसली डिमांड मार्केटमध्ये वाढल्यानंतर शेतकऱ्याला त्याची किंमत किंवा दाम चांगला मिळेल आणि त्याचं क्षेत्रसुद्धा आपल्याकडे वाढेल. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षापासून काय झालं आहे की मिलेटमध्ये महाराष्ट्रामध्ये आपण ज्वारी आणि बाजरीमध्ये आपली मेजर स्ट्रेंथ होती, परंतु तो एरिया खूप आपला कमी होत चालला आणि आपला डाएट पॅटर्नही बदलला. की मला आठवतं आहे बहुतेक आपले या ठिकाणी जे शेतकरी बॅकग्राऊंडमधून आलेली जी काही मंडळी असेल त्यांना माहीत असेल एक 20-25 वर्षापूर्वी आपला आहार म्हणजे मला लहानपणी आठवतं आहे की आमच्याकडं वरण भात किंवा गव्हाची चपाती पोळी हे अगदी सणासुदीलाच बनायची आणि रेग्युलर जे काही डाएटचा भाग होता ते आपली भाकरी, कालवण, कोरड्या असेच असायचे. परंतु नंतर आपण वरण भात पोळ्या वगैरे खायला लागलो. परंतु आमचे आजोबा मात्र अतिशय हट्टी होते, त्यांना भाकरीशिवाय दुसरं काही चालत नसायचं. परंतु आज आपल्या सगळ्यांना त्याचं महत्त्व कळतं आहे की हे मिलेट्स किंवा हे फक्त कोर्स सिरियल्स नाहीत, हे न्यूट्री सिरियल्स आहेत. आणि त्या अनुषंगाने गव्हर्नमेंट आणि असे रोटरी क्लब किंवा मधू धारीवाल बोलते मी. इथे मिलेट अवेअरनेससाठी आम्ही काही प्रॉडक्ट्स आणलेले आहेत. त्याच्यामध्ये हा सगळा मिक्स धान्यांचा आहे, मीठ लावून केलेलं स्नॅक्स म्हणून आणि खूप अप्रतिम टेस्ट आणि खुसखुशीतपणा आहे. त्याच्यामध्येच थोडासा मसाला लावलेला एक आहे हा प्रकार, तो पण खूप छान आहे. आणि इथे ज्वारी, बाजरी, नाचणीचे सगळे भाजलेले पोह्याचे चिवडे आहेत. याला काहीही तळलेलं नाहीये पण टेस्ट मसाला खूप चांगला आहे. आणि इथे बाजरीची आणि नाचणीची कुरडई आहे. तर तुम्ही विजिट करू शकता. इथे आता टेरासाईनमध्ये स्टॉल चालू आहे. आणि माझा नंबर हवा असेल तर 9403667886 मधू धारीवाल 9403667886. थँक्यू. Very nice program and well educated program, and so good things we came to know. One thing is about the gut bacteria that we have in our stomach. Dr. Sonam, who spoke so well, she went through cancer patients, so she understands. Another doubt about clearing about not eating multigrain wheat or multigrain millets also is very good because our body doesn't know to digest everything. These information, and Modi ji is promoting millet in India. That is one very good thing, and we have so much business also to do in this field. So overall, this is 5 your introduction. Myself Amresh Shah. I am from Mondri. Yes, sir. Good afternoon. I am Sanjay Patil. I am associated with BIOF Development Research Foundation and working with
tribal communities for revival of indigenous crops, millets, and today we are here for Millet Festival in Pune, organized by Rotary Club, which is one of the important initiative. And now next phase, what I feel, how we can link these tribal rural communities and develop the program around that for revival of millets, and then linking with the consumers and the markets. And one more thing, as Rotary is doing a great work in different parts of the country, here Rotary may think of developing millet village. It's a Rotary millet village, and it will be eye opener by linking various stakeholders, including students, farmers, grassroots innovators, scientists, then entrepreneurs, so that message will go ahead, and it will be good for sustainability of communities and good food for consumers all over. Thank you. जिल्हाधीक्षक कृषी अधिकारी पुणे, आज मला या ठिकाणी रोटरी क्लबद्वारे आयोजित कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली, तर मी आभारी आहे. आणि खरोखरच या ठिकाणी मिलेट किंवा ज्या ठिकाणी आपण ज्याला आता आपण पौष्टिक तृणधान्य म्हणतो, यावरती काम करणारे अनेक तज्ज्ञ, शेतकरी, उत्पादक, प्रक्रिया करणारे सर्व घटक या ठिकाणी उपस्थित झाले. आणि मिलेट किंवा पौष्टिक तृणधान्याला यामधून निश्चितपणे खूप चांगली चालना मिळेल आणि अर्बन सोसायटीमध्ये सुद्धा त्याचा खूप चांगला प्रसार होईल याची मला नक्कीच खात्री आहे. खूप चांगला आज या ठिकाणी इव्हेंट ऑर्गनाईज केला, त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद.